Yes, good morning, student. So today we will see how to solve such a kind of problem, that is simplify the this given Boolean equation using K-map, right? तो आपको तो ये पता है कि अगर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिकल फॉर्म में दिया समेशन ऑफ m1, 2, 4, something like that, then you can solve the problem with the help of POS and SOP also. But how to solve the problem if the equation is given, and which is very simple, that is the equation is given in front of you. What is the equation? That is w plus z bar and w bar x bar y bar z bar plus z bar, right? So this is the equation which is in terms of POS. इसमें दिया है POS से दिया है, right? So you need to solve the problem with the help of POS, right? So how to solve this problem? So whatever the equation is given, you need to convert this equation in terms of the standard form. Yes, so standard form कैसे निकालते हैं ये तो सबको पता है, right? So consider this term. So w plus z. Now tell me before that how many variables are there? W, x, y, z. मतलब how many variables are there? 4 variables are there, right? So let us consider this first term, that is w plus z bar, right? So w plus z bar यहाँ पे दिया है, right? So how many variables are missing here? How many variables are missing? X and y. How many variables are missing over here? X and y, right? So you need to consider while writing the standard form equation these two variables. So how to write the equation? Very simple. Now look at here. This w plus z bar we need to write as it is, plus x into x bar. Okay, these are the capital X, huh? Don't get confused. W भी capital throughout overall है, right? So x into x bar यहाँ पे लिखा है क्योंकि मेरा पहला टर्म यहाँ पे, प्लस y into y bar, right? So यहाँ पे मेरा दूसरा टर्म, क्योंकि दो वेरिएबल मिसिंग है फर्स्ट टर्म में, right? In another bracket, how many variables are missing? No variable is missing because देखो w, x, y, z चारों के चारों है, तो मैंने as it is लिख दिया, right? So this is a major step for conversion of standard form. Now how to write this equation? Now देखो यहाँ पे w plus z bar plus x plus y ऐसे लिखना है, plus x plus y, right? Yes or no? In another bracket, w plus z bar is first term is as it is, x plus y bar, right? Now third bracket, w plus z bar as it is, this one क्या रह गया? x bar plus y, and last w plus z bar as it is, what remains? X bar plus y bar. So with the help of Boolean law, you need to write the equation like that. From this entire term, we need to write we have written the 4 terms, and this term is as it is, I have written over here. Okay, now the problem conversion is finished over here. Now the same equation I have written over here, only it is in the sequence manner, मतलब w x y z के मैनर से लिखा है. देखो ये सेम मैंने इक्वेशन, ये वाला जो इक्वेशन है ये वाला मैंने सेम लिखा है, w is as it is, x is as it is, y is as it is and z bar is as it is. यहाँ पे भी सेम है w x y bar and z bar, यहाँ पे भी सेम है w x bar y and z bar, यहाँ पे w x bar y bar and z bar, and this term is as it is, right? Now why I have written this one? Because I need to convert into the statistical form. Now आपको तो पता है POS में, आपको पता है POS में क्या होता है? 0 होता है, तो मतलब अगर W होता है तो हम कैसे लिखते हैं? W को क्या लिखते हैं? 0. एंड W बार को क्या लिखते हैं हम? W बार को क्या लिखते हैं हम? 1 लिखते हैं. W बार को, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, W बार को क्या लिखते हैं हम? 1 लिखते हैं. Like that, by considering this term, you need to write this one. तो W है यहाँ पे, ये वाली टर्म देखो, okay? Now यहाँ पे A वाली टर्म देखो, ये W Z bar X Y मैंने कैसे लिखा है? देखो सॉरी, ये वाली टर्म W X Y Z bar, तो मैंने क्या लिखा है? W को क्या लिखा था मैंने? 0, मतलब कॉम्प्लीमेंट नहीं है, नॉर्मल है तो 0 लिखना है. x भी नॉर्मल है, y भी नॉर्मल है, z बार है इसीलिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा. यस, w नॉर्मल है, x नॉर्मल है, y बार z बार है इसीलिए 1 1 लिखा. यहाँ पे क्या है देखो,
W x बार y z बार, तो 0 1 0 1 लिखा. यहाँ पे क्या लिखोगे 0 1 1 1 and यहाँ पे all are 1. Now convert this into the normal form, that is 0 0 0 1, it is 1, it is 3, it is 5, it is 7 and it is 15. ओके, तो ये निकालने के लिए हमने क्या किया था, ये पूरा कन्वर्जन किया था, राइट. इक्वेशन देने के बाद ये, और कभी कभार एग्जाम मतलब कभी कभार क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, डायरेक्टली यहाँ से भी पूछा जा सकता है, पॉस का वो सॉल्व का. ओके, एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम. नाउ द मैक्सिमम नंबर इज 15, सो 4 वेरिएबल केम अप. So this is the layout of the POS. This is the layout of POS, that is W plus X, W plus X bar, W bar plus X bar, W bar plus X, Y plus Z, Y plus Z bar, Y bar plus Z bar, Y bar plus Z. तो ये क्यों लिखा है, कैसे लिखा है, मैंने मैं आपके वीडियोस में डिटेल में दिया है. So 0 1 2 3 4 5 6 7 12 13 14 15 16 17 sorry 8 9 10 11. So why to write like that also I have told you. Now you need to put 1 3 5 7 15 के बॉक्स में 0 डालना है. बिकॉज वाई, बिकॉज वी आर राइटिंग 0, वी आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ पॉस. ओके, और बाकी जगह पे आपको क्या डालना है 1 1 1 1 डालना है. बट हाउ टू राइट, हाउ टू मेक अ पेयर, हाउ व्हाट विल बी कंसिडर 0 और 1 इन केस ऑफ पॉस. वी आर कंसिडरिंग 0 इन केस ऑफ पॉस व्हाइल राइटिंग द इक्वेशन. तो देखो यहाँ पे एक कॉर्ड बन गया 4 का. तो हाउ टू राइट इक्वेशन, how many rows are there, 2 rows are there, and which one is common, that is W. So that I have written here W first. Yes, this one. Now how many columns are there, 2 columns are there, and which one is common, that is Z bar is common, so that I have written here Z bar. Yes, and what about this pair, this is also the pair. How many pairs are there, how many columns, sorry, how many rows are there. Yes, 2 rows, and which one is common, X bar. And how many columns are there, only the single column is there, no need to take commons, so that we need to write y bar plus Z bar as it is. So this is what the way we are solving this problem if the equation is in terms of equation is given, and directly ये अगर दिया है तो you can solve the problem with the help of by this 2 step only. Got it? अभी ये पॉस का प्रॉब्लम है, अगर सॉप का भी प्रॉब्लम ऐसा दिया, सॉप का इक्वेशन दिया, तो you need to again convert into the standard form and use the K-map for the SOP by considering the. Okay, thank you, thanks for the watching.